Hello, welcome back guys. Myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. In this video, we are going to discuss about process of vendor assessment in GEM portal. So let's discuss the whole process, and I will discuss what is the process on the portal and documentation required, as well as the practical difficulties faced by the stakeholders while doing the registration and the vendor assessment in GEM portal. So let's start the video, and first of all I will discuss what is the vendor assessment. So vendor assessment is one aspect of vendor validation on GEM portal. The GEM portal is introduced in 2017, and it's allowed to deal in GEM portal of to manufacturers and resellers, and as well as register as a OEM. OEM means ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी आप OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के तौर पे भी यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो। तो आज हम जानेंगे वेंडर असेसमेंट के बारे में। तो जेम पर जो बायर्स होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट और वेंडर क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें, और जैसे कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सर्टिफिकेशंस है उनके पास है या नहीं है, और भी अदर की पॉइंट्स है उनको वो वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली जो वैलिडिटी होती है वेंडर असेसमेंट की वो होती है 3 years। वेंडर कैन ऑप्ट फॉर वेंडर असेसमेंट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी। द गवर्नमेंट फी ऑफ वेंडर असेसमेंट इज 11,200 excluding GST. All entities that purchases a certificate are exempted from vendor assessment on GEM. तो बेनिफिट्स क्या होते हैं वेंडर असेसमेंट के? एक्सेस टू नेशनल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मार्केट, फर्स्ट ये होता है। इसके अलावा जो है स्पेशल प्रोविजंस एंड सेक्शंस फॉर स्टार्टअप्स, MSME एंड एम्पोरियम मार्केट। स्पेशल सेक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं स्टार्टअप्स, MSME एंड एम्पोरियम प्रोडक्ट्स के लिए। सेलर बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड J&K are exempted from ITR at the time of bid participation. So this is the benefits which is provided to the GEM seller, and thereafter the documentation required for vendor assessment. The company or firm registration documents required: name and contact detail with email address, pen and copy, right? MOA and AOA, GST registration, cancelled bank check, copy of purchase orders like delivery challans, GRN, invoice for government tenders, financial statement. It includes profit and loss account and balance sheet for last 3 financial years. Vendor statement, financial statement, vendor principal agreement copy. This is the documentation required for vendor assessment. What is the process for vendor assessment? Overall process for vendor assessment is carried out in 2 steps. First is desktop assessment, and second is video assessment. In desktop assessment, all document which is related to the manufacturer and goods and service need to be submitted. The aim of this assessment is to validate organization details, which also include the financial capacity, production capacity, and authenticity of the vendor profile. Video assessment, it includes confirmation and verification of all information provided through desktop assessment, right? It validates the entire process through video calling with the help of mobile based application. I hope this video is very helpful for you to understand what is the process for vendor assessment. If you have a query related to this, so you also contact on the details. And thank you for watching this video. Thank you very much.